talk about a very unique topic. It is related from my last video. In my last video, I have told about it, what is love yourself and how you can get that in your life. And today I am going to tell you about the 12 signs by which you can know that whether you have love yourself in your life or not. It will be a beneficial video for you all because basically we all have seen videos regarding the ways by which we can get love yourself in our life. But if we will be not coming to know that if we have that or not, and how can we apply that ways? So I'm going to tell you all about the ways or the 10 signs that will help you to know that whether you have love yourself in your life or not. Life is too short and uncertain, so these 10 signs must be watched and must be listened by all. Okay? So the first sign here comes that will help you to know you have love yourself in your life or not. Okay? First sign is that you are not feeling free to be who you really are. You will be not feeling free to you really are means if you are not feeling good to yourself, if you are not accepting the way you are from the inner side, means आप अंदर से क्या हो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते और आप बाहर से क्या हो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते. Mostly what happen that some of the people are harsh from the inside and some of the people are so soft and so polite from the outside. That happens a lot. We mostly see people अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, हम कहते हैं ना ये. So what things come कि firstly ये होना चाहिए, अगर आपके अंदर ऐसा कुछ है, ये फर्स्ट साइन है, अगर आपके अंदर ऐसा कुछ है, इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट द वे यू आर, इट मीन्स यू डू नॉट लव योरसेल्फ. सो इसको हटाने के लिए द फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट बी इक्वल फ्रॉम द इनर साइड एंड फ्रॉम द आउटर साइड. अंदर से और बाहर से एकदम सेम होना चाहिए कि आपके पीछे कोई भी बंदा ऐसा ना कहे कि अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ. ओके, सो कमिंग अप टू सेकेंड पॉइंट नाउ, that the second sign that will work you, that is you don't feel free to express your ideas. Yes, that happens. You do not feel free to express your ideas. What happens when we go in public place, then we do not feel free to express our ideas because we think that what the second party or the second person will think about our idea. है ना, थॉट काम की ये ना हो कि वो सोचने लगे ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रहा है और ये कैसी बातें कर रहा है. ये होता है. जस्ट एक्सेप्ट कि अगर दूसरे की बात की जितनी वैल्यू है ना उतनी वैल्यू आपकी ही बात की है. और अगर इफ इट इज दैट यू आर नॉट फील फ्री टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, यू डू नॉट लव योरसेल्फ. जस्ट रिमूव दिस साइन फ्रॉम यू एंड लव योरसेल्फ बाय expressing your ways in front of all, because your value is enough and your value is more than the second part. The value is equal for all. Okay, the third point here comes, you are not spending enough quality time alone. Yes, you do not enjoy your own company. अपने आप alone अकेले रहना ही नहीं अच्छा लगता, because what happen when you feel uncomfortable with alone ना, it means you do not love yourself. तो कुछ लोग होते हैं जिनको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है. बेसिकली मैं बहुत अकेले रहती हूँ, दैट मैटर. ओके, अकेले रहना चाहिए मीन्स अपनी कंपनी को एंजॉय करना चाहिए. वी शुड नॉट बी टाइम कि हमेशा अकेले रहो, दैट विल बी अ साइन ऑफ डिप्रेशन. इट शुड नॉट बी रो. हाँ, बट थोड़े टाइम के लिए अपनी लाइफ के बारे में और अपने बारे में सोचने के लिए हमारे पास थोड़ा टाइम होना चाहिए. दैट वी मस्ट एंजॉय अवर ओन कंपनी, एंड इफ यू डू नॉट एंजॉय दैट, इट मीन्स यू डू नॉट लव योरसेल्फ. Okay, this is the third sign. Now coming up to fourth sign, that is you are not being honest with yourself about your values. You are not honest with yourself. हम खुद से ही नेगेटिव सोचते हैं, कभी गलत सोचने लगते हैं, कभी कुछ मतलब ऑनेस्टली खुद से भी आंसरेबल नहीं करते हैं. कभी खुद से हम बैठे बैठे, कुछ लोग डे ड्रीमिंग लाइक होते हैं ना, वो जब खुद से भी बातें करते हैं तो एक नेगेटिव फीडबैक मिलता है. एंड ऑल दैट व्हाट हैपन, यू डू नॉट honest with yourself and you do not value your own ideas. अपने आइडियाज की ही हम वैल्यू नहीं करते हैं, अपने वर्ड्स की ही वैल्यू नहीं करते हैं, बिकॉज वी थिंक दैट जो हमारे सामने वाला बंदा है, जो हमारी सराउंडिंग है, वो ज़्यादा सही है. ओके, बेसिकली आई हैव सेड दैट योर वर्ड्स ऑल्सो वैल्यू. ओके, सो दिस साइन इज ऑल्सो द साइन विच शो दैट यू डू नॉट लव योरसेल्फ. ओके, कमिंग अप टू फिफ्थ पॉइंट, दैट इज you are not being true to your inner peace. Yes, what you are from inside, you do not accept that. You do not feel free from your inner peace. If you are good from the inner peace now,
then you will also think that I'm not good about that. Friends, just learn this, that nobody is perfect in this world, and how can you be perfect? Nobody is perfect. This is a quotation. Okay, everyone have flaws, everyone have mistakes. Each and every person is इंसान, और इंसान से गलतियां होती रहती हैं. बट इट डजंट मीन कि गलतियां करते जाओ करते जाओ करते जाओ. ये नहीं होना चाहिए. You must work upon that. धीरे धीरे करके it's a time will come that you are going to be the bright star. Okay, so work upon this sign. Now the sixth point here comes, that is, you are not giving yourself positive feedback. Yes, positive feedback नहीं देते. Maybe you are doing a lot of things for your family, for your friends and your colleagues and all, but you do not accept that. You are not giving them positive feedback. If you are helping someone now, then after helping that you will be thinking कि मैंने ऐसा करा तो कहीं मैंने गलत तो नहीं करा, कहीं मैंने ये तो नहीं करा, कहीं मुझे कुछ और कहना चाहिए था, मैंने कुछ और तो नहीं कह दिया. You do not give yourself positive feedback. You do not think कि हाँ जो हो गया, I am satisfied with that. Sometimes it happens. If you are not satisfied with yourself, you do not give your positive feedback after the work. It means you do not have love yourself. So just remove this sign, okay? Now the seventh point here comes, that is, you are not taking pride in your physical appearance. Yes, it's mostly seen in the teenagers और बच्चों में और बहुत लोगों में ये देखा जाता है. What happens कि they think that मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, मेरे लुक्स ऐसे होने चाहिए, ये होना चाहिए. लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, लोग मोस्टली उनकी तरह बनना चाहते हैं. सेलिब्रिटीज़ को हम लोग सबसे पहले देखते हैं, है ना. फिजिकल अपीयरेंस अपने आप से खुश नहीं होते हैं कि मेरी मतलब जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट. ऐसा होता है. और उसकी वजह से क्या होता है कि हम पब्लिक में बहुत शाइनेस फील करते हैं. वी फील शाई टू बी इन पब्लिक. सर झुका के बैठते हैं और हमें लगता है कि हमें कोई नोटिस नहीं करता, बिकॉज वी आर नॉट गुड एन स्ट्रक्चर. नाउ एवरीवन इज गुड. ओके, so the sign is this: if you're not accepting your physical appearance, it means you do not love yourself. Just accept the way you are and you will be love yourself. Okay, now the eighth point here comes, and the eighth sign, that is, you are not taking pride in your intellectual abilities. Yes, abilities means if you are having a lot of knowledge about a particular work but you do not express because you think that it's negative sign again come. Okay, you think that your abilities are not good enough to be said or to be shared with all. You think that your abilities are wasteful. The person will not notice that. It's a sign that you do not love yourself. So just remove this sign today only. So the ninth sign here comes, that is, you are not comfortable about letting others know your intellectual opinions. आप अपने आप ही दूसरों को उनकी मतलब कोई अगर आपसे ओपिनियन ले रहा है, then you will say no it's okay. आप चाहते भी ओपिनियन देना, but why you do not give? The reason is what the other person will think about me, what the opinion I am giving. If he or she is thinking or taking your opinion, just give it. Maybe your opinion works and you must be getting a very success in your life. And it can change a little bit also, the ideas, the professions. What happens in schools when annual function is going on now, some students participate on that, some want to participate but does not participate because they think that what's going to be happen, what's going to be gone. If I will say to the teacher, what she will think about me, what will be my opinion, my classmates, my batchmates will make a fun of me in front of all. That points come in our mind. It means we not love yourself. Just share the opinions to your abilities and all in the public. Okay, so the ninth point have been over here as the ninth sign, and the last sign at the 10th sign, which will help you a lot, come at the last point, that is, you are not able to open up to those you love. Basically कुछ लोग इसको बहुत प्यार से समझते हैं कि जैसे हमारे मॉम हैं, हमारे फादर हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी फ्रेंड्स हैं, जिनको हम बहुत पसंद करते हैं. हम बेसिकली उनके साथ अपने ओपिनियंस, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं, सोचते हैं कि मे बी इट विल बी अ बर्डन फॉर देम, मे बी इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर देम. सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज़ बताऊँ,
ये बात आज से अपने दिमाग में ठान लो कि अगर प्रॉब्लम को पॉकेट में रख के चलोगे ना तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी. Just take it off the problem from the pocket and the problem will decrease day by day. It will come to be a decrease, and if you are keeping that problem in your pocket, it will be going on, going on, going on. It will be just complete and share your all the problems with your family members. Basically, all the students must share their problems with your parents. I also used to share all the things with my mother. She supports me in my life a lot. Okay, so I have told you about all the 10 signs which will help you a lot in your life. Life is too uncertain, it is too short. You all must work upon that, and I'm sure that you all are going to remove all these 10 signs. Friends, do not think that I am skipping or मैं तो एक topic को पकड़ के बैठ गई हूँ. I'm holding one of the topic that is, but I am holding the topic that is, I just want success in life, and each and every one wants success in life. So the first point that start from the self confidence I had started. Then the second video I have made on the ways. This is love yourself, the signs which will help you in the love yourself. And friends, if you have or many points in your mind that will help in the path of the success, just comment me right now in the comment section. I'm going to choose that next topic which will be best. सब लोग मुझे कमेंट करना, जो भी बेस्ट टॉपिक लगेगा आई विल बी मेकिंग नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट ओनली. ओके, ओके, सो बाय बाय एंड एंजॉय योर डे. No, bye, friends. I have mostly seen you all watch my videos full but forget to like my videos. This time, please like my video and subscribe to my channel if you have not subscribed. Thank you. Bye bye.